अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन। डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स इस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे दिए हैं जो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे, जो हमारा दिमाग कहलाता है, ऑब्वियसली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एंटीरियर मोस्ट पार्ट कहलाता है। अगर हम यहाँ पे, ये हमारा ब्रेन है और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड है। अगर हम इसको इलोंगेट करेंगे नीचे की तरफ तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। इस नर्वस सिस्टम का जो एंटीरियर पार्ट है इसको हम ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इस ब्रेन की बात करेंगे, ब्रेन एनक्लोज होता है इन ए कैविटी और ए स्पेस जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम, ये जो हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर जो जगह रहती है जिसमें हमारा ब्रेन फिट रहता है, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। लेकिन क्रेनियम खुद प्रेजेंट होता है स्कल में। ठीक है। तो ये जो क्रेनियम है, अगर मैं यहां से ये सारा ये पार्ट, इसको मैं स्कल मान लूं, ठीक है, और स्कल का वो हिस्सा जिसमें ये ब्रेन प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है। अगर हम इसके वजन की बात करेंगे, वेट की बात करेंगे, इसका वजन है लगभग एवरेज जो है 1220 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक, ये इसका वजन होता है। और जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी में ये जो ब्रेन है ना, ये सबसे पहले एक न्यूरल ट्यूब की शक्ल में, जो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, न्यूरल ट्यूब की शक्ल में ये उभरता है, इमर्ज होता है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन होते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स की, डिफरेंट पार्ट्स की, जो इसमें ब्रेन के फिर अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, चाहे वो सेरिब्रम, सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लांगेटा, ये बाकी पार्ट्स हैं। चलिए, तो अगर हम इस वेट के बाद इस ब्रेन की स्पेस की बात करेंगे, इसको भी हमने डिस्कस किया। और क्रेनियम के अंदर यहां पे 3 लेयर्स होते हैं। देयर आर 3 लेयर्स which are present inside the brain. ये हमारा आउटर क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर इनर मोस्ट पार्ट जो होता है इस क्रेनियम के, इसके अंदर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। वो जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है, प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है, इनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस, राइट, हियर दे आर लोकेटेड एज मेनिंजेस। ये जो मेनिंजेस है, मेनिंजेस हमारे पास 3 होते हैं। दे आर बेसिकली 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज डूरामीटर, second layer that is called as arachnoid membrane, and the innermost layer that's called as pia mater. Okay, this is the toughest covering which is present in the brain, and this is very hard. Okay, and after that there is arachnoid membrane which is present in between pia mater and the durameter, and the innermost layer that is called as a pia mater. Okay, so ये जो तीनों कवरिंग्स है ब्रेन में, ये काम करते हैं प्रोटेक्शन का। ये एक्ट करता है एज ए कुशन। जो भी शॉक होता है, कभी कभार झटका लग जाता है हमारे ब्रेन को आउट ऑफ नोवेयर, और इस शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं ये 3 लेयर्स, राइट। अगर हम एक लेयर लेंगे इसको हम मेनिंक्स बोलते हैं। अगर हम 3 लेयर्स लेंगे इसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। यहां पे ये जो एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और पिया मेटर है, इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड एग्जिस्ट करता है। यहां पे अगर मैं 2 लेयर्स की बात करूंगा, एक है ये वाला लेयर और दूसरा है ये वाला लेयर, इन दोनों लेयर्स के दरमियान यहां पे एक फ्लूइड एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूअसली फ्लोट करता रहता है इस दिमाग में। ओके, और इस फ्लूइड का नाम है cerebrospinal fluid. Getting my point? Cerebrospinal fluid
acts as a cushion, it acts as a shock absorber, and ये हमेशा इस ब्रेन को क्या वेट रखता है, गीला रखता है। और अमेजिंग चीज मैं आपको यहाँ पे एक और बताऊंगा कि जो टोटल वेट हमारा 1400 ग्राम है हमारे ब्रेन का, लेकिन ड्यू टू दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो ब्रेन है ये फ्लोट करता है जिस तरह से एक शिप समंदर में फ्लोट करती है, और रिडक्शन जो है यहाँ पे इस ब्रेन में वेट का वो ऑलमोस्ट रहता है 50 ग्राम इनसाइड द क्रेनियम। यानी अगर आप इस ब्रेन को बाहर निकालेंगे, जो एक ईंट होती है या ब्रिक होती है, इसके वजन की लगभग होती है, लेकिन अगर ये स्कल के अंदर हमारे फिट होता है उस वक्त इस ब्रेन का जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम होता है। दिस ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ द वेट is due to cerebrospinal fluid, which basically makes this brain float in our cranial cavity. Now, when we'll talk about this brain after these meninges, there is this structure. This is called as cerebrum, right? Before discussing cerebrum, let me give you briefly the major parts of the brain, which I have already discussed in the previous lecture. If I'll talk about this parts of brain, I have already told them. This is forebrain, this is midbrain, and the last one is hindbrain. Okay, this forebrain is also called as prosencephalon, this midbrain is also called as a mesencephalon, and this hindbrain is also called as telencephalon. Okay, now fine. अगर हम इस फोरब्रेन की बात करेंगे, हमारे यहाँ पे तीन चीजें आती हैं। एक हमारा ओल्फैक्टरी लोब्स आते हैं जो स्मेलिंग के लिए, स्मेलिंग पर्पस के लिए होते हैं, और इसके बाद जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन जो होता है, ओल्फैक्टरी लोब्स के बाद इसमें और दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम नाम बोलते हैं सेरिब्रम। Okay, this is first structure, this is second structure, और third structure जो है that's called as diencephalon. Okay, when we talk about this midbrain, if I will give you a classification, this is forebrain, okay, and this is hindbrain, and this part, this is called as midbrain in short. Okay, and when I will talk about this midbrain, we will talk about two important structures which are present in this. One is called as crura cerebri, and the second part is called as corpora quadrigemina. Okay, when I will talk about this hindbrain, in hindbrain we talk about, one is called as medulla oblongata, and the second is cerebellum. Okay, medulla oblongata and cerebellum, and one more part that is called as pons varoli. Very important. We are going to discuss all these one by one, but before discussing them, let us first of all talk about cerebrum in bit detail. Okay, we will talk about this cerebrum. I will talk about this cerebrum here. When we talk about this cerebrum, this is most complex and largest part of brain. Its outermost part, this one, this is called as cerebral cortex. Right? This is basically an area which is highly folded area, cerebral cortex, and this is 1.5 mm in thickness.
ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमने यहाँ पे बात की थी फोर ब्रेन की, फोर ब्रेन में हमने बात की थी, शाबाश। एक हमने इसमें सेरिब्रम के बारे में बात की, राइट। एक हमने इसमें ओल्फैक्टरी लोब्स की बात की, और हमने इसमें बात की, वेरी गुड, दे आर कॉल्ड एज, वेरी गुड, cerebrum, olfactory lobes and diencephalon. Now, when we talk about this cerebral cortex, this is the outermost line, and it is composed of grooves or invaginations. There are two types of grooves which are present in this cerebral cortex. These are like this. One upward groove, that is called as gyri, and the downward groove, they are called as sulcus. Okay, these are gyri and sulcus. I hope this makes the sense. Now, another important part is this, that ये जो cerebrum है या cerebral cortex है, outermost layer, ये बना हुआ होता है ग्रे मैटर का, made up of gray matter. Now, what is this gray matter? Let me talk about this gray matter in bit detail here. What is gray matter? My dear students, when we talk about this gray matter, we talk about bunch of cell bodies. If this is a nerve cell, and when they form clusters, when they aggregate together, this region, this is the main cell body, their aggregation forms gray matter. Very important. And this part, axonal part, axonal part, they together form white matter. This should be remembered for future information. This called as a white matter. सेल बॉडी का एग्रीगेशन ग्रे मैटर बनाता है। तो इसका मतलब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। लेकिन इस ग्रे मैटर के नीचे, below this gray matter, here, deep inside the gray matter, there are, beneath gray matter, there are large number of neurons, in fact billions of neurons. They are called as medulated neurons. But they are present in large gatherings. लार्ज गैदरिंग्स की वजह से ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता है जो एक ओपेक अपीयरेंस का स्ट्रक्चर होता है, ओपेक। और ये जो ओपेक स्ट्रक्चर है ये लार्जली व्हाइट मैटर होता है, white matter. I hope this makes sense. One more important point I'm going to add here. If I will see this cerebrum in detail, basically it has got this type of structure. It is differentiated into two cerebral hemispheres. Okay, two hemispheres, and these two hemispheres are basically formed by a central line that is called as longitudinal fissure. Longitudinal fissure basically differentiates this cerebrum part into right cerebrum and left cerebrum, right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. And each cerebral hemisphere is composed of four lobes. Very important. This and this, they are composed of four lobes. What are those lobes? They are four in number. One is frontal lobe. Second is parietal lobe. And third lobe is occipital lobe.
and the fourth one is temporal lobe. यहाँ पे इन सारे लोब्स का फंक्शन जो है ना वो अलग अलग रहता है. जैसे अगर मैं इस फ्रंटल लोब की बात करूंगा, ये जितनी भी सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती है, लर्निंग होती है, मोटिवेशन होता है, कभी कभार हमें एक नई चीज सीखनी पड़ती है या कॉम्प्लेक्स टास्क्स करने पड़ते हैं, ये जो सारा काम है ना ये वाला ये फ्रंटल लोब करता है. इसके अलावा जितने भी हमारे जो मोटर एरियाज होते हैं, जहां पे हमें मसल्स का इनवॉलंटरी या वॉलंटरी मूवमेंट होता है, वो भी इस फ्रंटल लोब से हम करते हैं. उसके बाद जो ये पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल है टच, सेंसेशन, पेन एंड टेम्परेचर के लिए. ओके, दिस इज रिस्पॉन्स फॉर दिस. अगर हम इस ऑक्सिपिटल लोब की बात करेंगे, ये है फ्रंटल लोब, this is parietal lobe, okay, and this is occipital lobe, and this is temporal lobe. I hope this makes sense. ये region है responsible किसके लिए? complex tasks के लिए. It is responsible for making complex decisions, learning, right, and focusing on more logical रीजंस एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स. और पैराइटल लोब जो है ये हमारा सेंसेशन, टच, पेन और टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर हम ऑल्फैक्टरी लोब्स की बात करेंगे, दिस कंटेन्स विजुअल सेंटर, यानी जो हमारे आईज है, हम देखते क्या है, हम किस चीज को देखते हैं और क्या देखते हैं, ये असल में सारी इंफॉर्मेशन जो है विजुअल कॉर्टेक्स में होती है. ओके, और विजुअल कॉर्टेक्स के बाद ये वाला जो टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जितनी भी चीजें हम सुन पाते हैं. ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस cerebrum. But here is one more information. In the last lecture I told you about this. These two cerebral hemispheres are connected by a bunch of neural tracts, okay, bunch of neurons, that is called as corpus callosum. When we will bring this corpus callosum out from this brain like this, it is like this. It contains one more structure which is present here. This is called as fornix. Okay, this is called as fornix, and these are the two grooves, front anterior groove, and this is the posterior groove, and this is called as genu. Okay, this is called as genu. Now moving ahead, the second part of this brain, that is called as that's called as midbrain. Okay, that is situated here, and the third part of this brain, that's called as hindbrain.